Welcome all. Today we'll understand chapter number 3 of your English literature, which is Gulliver's Voyage through Brobdingnag, which is written by Jonathan Swift. So let's begin. The story you're about to read is extract from novel Gulliver's Travel. Novel relates adventures of doctor called Gulliver who makes 4 journeys to strange places. His first journey was land of Lilliput, where the Lilliputians were barely 6 inches tall. Read this extract where Gulliver describes what happened when he and his crew reached Brobdingnag on his second journey. So, see, students, Gulliver is the main character of the story. Voyage means when we are like somebody goes on a journey, especially through in water. So, it's related to ocean, okay. And Brobdingnag is a place where this Gulliver, the main character, reaches, okay. So, this chapter is written by Jonathan Swift, and this story is an extract. मतलब this is not a full story, it's a extract. Like extract ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ full novel ਚੋਂ kind of ਪੂਰੀ book ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ chapter ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. So this is of just 4-5 pages only. So this is an extract, not the full novel. Full novel is Gulliver's Travel. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ Gulliver ਦੀ 4 travels ਹੈ to 4 different strange lands. अलग-अलग 4 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੂੰ discover ਕਰਦਾ ਹੈ. So this is just an extract. The name of extract is Gulliver's Voyage to Brobdingnag. This is one of his voyage. मतलब एक travel दे बारे गल कीती गई है. All right. So this novel relates adventures of doctor. So Gulliver was actually a surgeon, a doctor, but he never had an interest. ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਵੀ means surgeon ਬਣਨ ਵਿੱਚ, doctor ਬਣਨ ਵਿੱਚ interest ਨਹੀਂ ਸੀ. He had interest to discover new places. ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ. To have journeys in through oceans. ocean ਦੇ through journeys ਕਰਨਾ, voyage ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ to different places. So he just had a talk with his wife. अपनी wife ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ I want to do a job in a ship. So ਉਹਨੂੰ job ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, and he now this story is about the Brobdingnag, okay. So his first journey was to Lilliput. So first journey ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ? Lilliput ਦੇ ਵਿੱਚ, where Lilliputians were 6 inches tall. ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜੋ human beings ਹੁੰਦੇ ਹੈ, they were just 6 inches. They were just 6 inches. ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ height 6 ਇੰਚ ਸੀ. You know how much 6 inches are? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 2 fingers ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ like standing line ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ this is just 6 inches. Maybe your hand is of 6 inch. तो इन्हें छोटे छोटे human beings were there, right? So at that place he was looking like a giant person. So बहुत वड्डा पहाड़ लग रहा सी Gulliver. But in this place to Brobdingnag, where Gulliver describes what happened when his crew reached Brobdingnag on second journey. So Brobdingnag is second journey. दूसरी बार ਜਦੋਂ अपनी voyage ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ. On 17th day of June 1703, a boy on topmost saw land. We could soon see great island or continent. We didn't know. We anchored shipped in a creek. Then some of us set out in a boat to look for fresh water. So he's talking about 17ਵਾਂ ਦਿਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, and it was June 1703. Exact date has been told. तो अ बॉय ऑन टॉपमोस्ट सो लैंड. तो जो शिप ਦੇ ਵਿੱਚ ਬॉय ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਆ ਗਿਆ. ਹੀ ਕੁਡ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੈਂਡ ਏਰੀਆ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਐਂਡ we don't know whether it was island or continent. So ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. We anchored on ship in a creek. Then some of us set out on boat to look for fresh water. तो कुछ जो ਉਹਦੇ companions ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨੀਚੇ ਉਤਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ fresh water ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ. You know the water of ocean is not drinkable. We cannot drink that water. Why? Because we always the salt we eat in our foods is extracted from sea water. So we cannot drink sea water. It's very salty, right? So we whatever we drink is not the ocean water, it's different one. It's fresh water for drinking. So पानी ढूंढते हैं. While other walked around shore looking for water,
I walked on other side, but nothing interesting to see. I began to feel tired. I turned back towards the creek. फिर वो कहते मैं थोड़ा जिहा ਚੱਲਿਆ और मैं किनारे तक पहुंचा और मैं देखा कि कुछ भी नहीं है, कोई खास नहीं है, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है और मैं बहुत थकिया होया सी। सो जो मैं वापस देखा, टू माई सरप्राइज आई सॉ माई फ्रेंड्स बोट एंड रोइंग हार्ड टूवर्ड्स द शिप। और उन्होंने बड़ा सरप्राइज होया, मीनस ही वॉज शॉक्ड, उन्होंने बहुत बुरा लग्या वट कि ਉਹਦੇ जो फ्रेंड सी, ਉਹਦੇ जो कंपैनियन सी, दे लैफ्ट हिम, ਉਹਨੂੰ छोड़ गए। ओके एंड सॉरी एक्सक्यूज़ मी, दे लैफ्ट हिम, ਉਹਨੂੰ छोड़ के बोट ਦੇ ਵਿੱਚ फटाफट रो करके वापस चले गए। मतलब उन्होंने ਉਹਨੂੰ चीट किया और ਉਹਨੂੰ अपनी शिप 'ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ जगह ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। I would have called out to them when I saw a huge creature shaped like man rushing after them. The sea came up to his knees. He took huge step at point. I turned, ran blindly to a steep hill. I found the land fully कल्टिवेटेड। सो वट हैपन, वो कह रहे हैं कि मैं बहुत जोर दी येल करन वाला सी, चीकन वाला सी, अपने फ्रेंड्स ਨੂੰ बुलाने वाला सी कि प्लीज़ टेक मी अलॉन्ग विद यू। बट अचानक की होंगे बहुत वड्डा क्रीचर आता है, क्रीचर इन द सेंस ह्यूमन बीइंग है जो बहुत जायंट है। ठीक है, ही जस्ट ही इज़ वॉचिंग हिम एंड ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ कि ही इज़ लाइक अ मैन, एक इंसान वांगू ही है। बट वो जो मेरे बोट्स वाले मेरे बोट्स कंपैनियन सी जो बोट ते चले गए सी मैनू छोड़ के, ही वॉज जस्ट गोइंग रशिंग आफ्टर दैम। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ ਹਾਊ ਡੀਪ ਇਟ ਇਜ਼, ਬਟ ਉਹ ਜੋ ਜਾਇੰਟ ਮੈਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਹਾਊ ਜਾਇੰਟ ਹੀ ਵੁੱਡ ਬੀ, ਇਮੈਜਿਨ, ਰਾਈਟ। ਤੋ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਗੁਲੀਵਰ ਟਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਰਨ ਅਪ ਅ ਸਟੀਪ ਹਿਲ, ਫਟਾਫਟ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਿਲ 'ਤੇ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫੁੱਲੀ ਕਲਟੀਵੇਟਿਡ, ਪੂਰਾ ਕਲਟੀਵੇਟਿਡ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਦੇयर ਵਾਜ਼ ਅ ਕ੍ਰੌਪ ਆਫ ਬਾਰਲੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਉਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਰਲੇ। ਐਂਡ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਾਓ, ਕ੍ਰੌਪ ਕੀ ਸੀ ਉਹ। let me tell you what the crop is. The plants rose at least 40 feet in air. तो जो बारले जिमें ਆਪਾਂ किसान खेती करते हैं, सो यू सी जो खेती होंदी है तो इन्ने उच्चे सी क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल यू आर स्टैंडिंग इन अ वीट फील्ड, कोई ऐसी खेत विच खड़े हो जिथे कणक उगाई हुई है। ओके एंड तुसी उस खेत दे विच खड़े हो और तुहाडे तो 40 फीट हाई है वो, इन्नी वड्डी मतलब फसल है। सो ईवन द ग्रास वॉज 20 फीट हाई। तो जी ग्रास होंगी है दैट इज़ जस्ट अंडर आर शूज़, है ना, अपने शूज़ के नीचे ही आ जाती है। बट जी ग्रास सी वो 20 फीट हाई सी एंड जो क्रॉप सी वो 40 फीट हाई सी। सो इमेजिन हाउ मच हाई इट वुड बी। और जो गुलिवर है वो बेचारा टाइनी जा, यू कैन इमेजिन वो इंचज़ विच ही होएगा। एंड ही वॉज लाइक अ लिलीपुट स्टैंडिंग देयर, राइट। I took what looked like main road, but local people must have been only footpath. I walked on end of field. It had hedge around it, which was least 120 feet high. I was trying to find gap in the hedge. Suddenly, I saw one of the local people coming towards the hedge. So कहंदे कि मैं देखन नूं तां मैनू एवें लग रहा सी it was a main road, but actually it was a footpath. So he was tiny, that's why everything was like was seeming to be a giant thing for him. Okay, वो कहंदा कि मैं जदों बड़ी मुश्किल नाल फील्ड दे एंड विच पहुंचिया जदों मैं, ठीक है, जदों तां की होया, इट हैड hedge around it. What is a hedge? Hedge is a row of bushes or small trees planted together, usually along the edge of garden. तो हैज इज़ अ काइंड ऑफ यू नो जिमें ਆਪਾਂ ਝਾੜੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਖੇਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਝਾੜੀਆਂ ਉਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਕਾइंड ऑफ दैट। ओके सो इट हैड अ हैज। उस हैज ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹ ਜਦੋਂ was at least 120 फीट है, और इन्ना उच्चा सी 120 फीट मीनस अगर एक ह्यूमन बीइंग है ही इज़ 6 फीट, मैक्सिमम 6 फीट हाइट होंदी है। और लाइक सुपर केसिस दे विच 6 फीट तो ज़्यादा होएगी, 7 फीट होएगी, 8 फीट होएगी, बट दिस वॉज 120 फीट्स हाई। सो जस्ट इमेजिन 120 पीपल आर स्टैंडिंग, एक दूसरे के ऊपर खड़े हैं, ओके, जिस्मा छाए, ऑलराइट। सो
ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ गैप, ही वॉन्टेड टू गो, मतलब वो उस खेत चों निकलना चाहता सी, सो गैप फाइंड कर रहा सी कि इस तरीके नाल उस खेत चों बेचारा बाहर निकल जाए। सडनली ही सॉ लोकल पीपल कमिंग टूवर्ड द हैज, तो उन्हें देखा कि कुछ लोकल पीपल हैं उसे पिंड दे वो उत्थे आ रहे हैं हैज दे कोल। He appeared as tall as tower, took about 10 yards every step. That I ran to hide myself in the corner. I saw him in the top of hedge. Looking back into next field, he was calling in voice and sounded like thunder to my ears. तो अचानक ही होया कि वो जो इंसान आया सी, ही वॉज वेरी टॉल, जिवें आपां कह दिंदे ना सच हाई टावर, ओके, सो ही वॉज दैट मच टावर जिन्ना लंबा सी वो गुलिवर दे सामने, ओके। एंड गुलिवर वो वॉज वेरी स्केयर्ड, बहुत डर गया और वो कहता कि मैं अपने आप ਨੂੰ कॉर्न ਦੇ ਵਿੱਚ छुपाਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। कॉर्न इज़ काइंड ऑफ कॉर्न्स वी ईट, स्वीट कॉर्न्स एंड ऑल दैट, पॉपकॉर्न्स आर मेड अप ऑफ कॉर्न्स, ड्राइड कॉर्न्स, तो मक्की ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। सो ही वॉज ट्राइंग टू हाइड इन दैट फील्ड, मतलब मक्की ਦੀ खेती ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛੁਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ढूंढ ना ले। एंड ही वॉज कॉलिंग, मतलब जो इंसान आया सी वो बहुत अपने फ्रेंड्स ਨੂੰ बुला ਰਿਹਾ ਸੀ और इट वॉज सीमिंग टू गुलिवर ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਥੰਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਟਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਦੈਟ। ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਥੰਡਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਫਟ ਰਹੇ ਸੀ, ਓਕੇ। ਸੂਨ ਆਈ ਸੌ ਅਦਰਸ ਲਾਈਕ ਹਿਮ ਕਮਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਹਿਮ, ਆਲ ਆਫ them were carrying sickles in hands, their clothes were showed that they were laborers. The first one seemed to be the master, the farmer. So sickle is a tool which is like a curved blade having a handle at the end of it, wooden handle. It's used for cutting the crops and the grass, ठीक है। तो सिकल ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਕਲ ਹੈਗੇ ਸੀ ਲੇਬਰਰਸ ਦੇ ਹੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਸੀ, ਸੋ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਜੋ ਮੇਨ ਜਿਹਦਾ ਖੇਤ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਫਾਰਮਰ ਹੁੰਦਾ। The master said something to them and they came to field where I was hiding. I moved away I could, but movement was very difficult as stalks of corn were placed very close together. ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਡਰ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਛੁਪ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਟ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਫॉर मी, क्योंकि जो stalks ਹੁੰਦੇ ਆ, what are stalks? Stalk is main stem of plant. It's a narrow stem that join leaves, flowers, fruit to main stem of plant. Okay, so that's a stalk. So just ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ crop ਸੀ, it was so close ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਨਿਕਲਣ ਦੀ। I could hardly squeeze between them. Soon I reached part of field where crop had been damaged. तो ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪਿਚਕ ਪੁਚਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਡਿਊ ਟੂ ਰੇਨ ਜੋ ਰੂਇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰੌਪ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੌਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੌਪ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਟ ਦੈਟ ਪਲੇਸ ਹੀ ਰੀਚਡ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਕੰਫਰਟੇਬਲ, ਮਤਲਬ ਦੈਟ ਐਟ ਦੈਟ ਪਲੇਸ ਹੀ ਰੀਚਡ। ਐਂਡ ਵਟ ਹੈਪਨਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ, हेयर द स्टॉक्स वर मैटेड टुगैदर। तो स्टॉक्स की सी द अदर साइड दे वर स्टैंडिंग, तो इत्थे नीचे गिरे हुए सी, मैट की तरह बिछे हुए सी बिकॉज ऑफ हैवी रेन। आई कुड नॉट स्क्वीज थ्रू, और वो कहता मैं उन्होंने चो निकल नहीं पा रहा सी, एज जस्ट इट वॉज अम्पॉसिबल टू मूव एनी फर्दर। वो कहता कि मैं बिल्कुल भी निकल नहीं पाया, उस तो बाद फस गया उत्थे ही। आई ले डाउन देयर वेटिंग फॉर सर्टन दैट, एंड ही वॉज जस्ट वंडरिंग कि नाउ माई डेथ इज़ सर्टन, मतलब हुन मेरी डेथ होने वाली है, बिकॉज एनी वन विल कम एंड स्टेप ऑन मी एंड आई विल डाई, और अदरवाइज दे विल कैच मी। सो इन दिस वे दिस इज़ द होल the extract. Now it's finished, and the novel is too long, but here your chapter has finished. So I hope you understood the chapter. Thank you so much.